Namaste and welcome to Nuvoco presents Ghar Banao Apna, the News 18 initiative. मेरा नाम आनंद नरसिम्हन है और इस सीरीज में हम बात करेंगे खुद के घर की, जिसका सपना हर आम और खास दिखता है। तो घर बनाने में कितना खर्चा आएगा, लेआउट कैसा बनता है, परमिशंस कैसे ली जाती हैं, कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज करें, हाउ मच लोन कैन वी गेट, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स दैट कैन हेल्प अस अचीविंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ आवर लाइफ। इन सब पर बात करने के लिए नाउ वी हैव अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड लेट मी इंट्रोड्यूस आवर एक्सट्रीम गेस्ट्स टू ऑल आवर व्यूअर्स. I have with me JB Singh, leading architect based out of Gurugram, Pankaj Bansal, Chief Business Officer, bankbazaar.com, Sudhir Krishnan, former Secretary, Urban Development Ministry, Government of India, and Chirag Shah is the head of marketing Nuvoco. तो आप सबको नमस्ते. Thank you very much for this very enterprising, very engaging, and perhaps I'm also looking forward to learn something कि अपना घर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए and what are the advantages that I can take. घर बनाना एक सपना तो है ही. इस सपने को सच करने की शुरुआत होती है प्लॉट लेने के साथ कि ज़मीन कहाँ से मिले, ज़मीन का टुकड़ा कहाँ मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितना पैसा लगेगा. जब नॉर्मल घर, अच्छा पक्का मकान लीगलाइज कॉलोनी में बनाने के लिए पर स्क्वायर फुट कॉस्ट क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, चलिए ये सवाल इसी से शुरू करते हैं. जेबी सिंह जी, आप ही बताइए कि किस तरह की बजटिंग की जाए. So the structure cost usually, in an area where we are talking about, falls somewhere around 900 to 1,050 rupees a foot. But the finishing varies a lot. That can be right from 1,000 rupees to you can go up to and spend 5,000 bucks. So collectively, if we talk about the cost of construction in the area, so somewhere around 2,500 approx you can be able to achieve your dream home. उससे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि किस्तें, मुझे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो लेट्स आस्क आवर friend from Bank Bazaar कि what is a good time and when should you look at and what are the trends to read to say okay this is the right time to go in for a home loan. और फिर ये home loan plus loan to purchase a plot or loan to construct a house, are these different? लोन होम लोन में और प्लॉट में कि होम लोन एक रेडी पोजीशन वाली चीज है. मतलब आपके पास ऑलरेडी एक घर है, आइडेंटिफाइड है, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड है, जो बना है, जिसमें आप जाके या तो आप इन्वेस्टमेंट की तरह रह सकते हैं या आप उसमें रह सकते हैं, तो वो आपको होम लोन मिल जाता है. और होम लोन नॉर्मली आज की डेट में इंडिया में 80% ऑफ योर लोन टू वैल्यू पे आराम से होम लोन मिल जाता है. अगर आप प्लॉट का लोन भी ले रहे हैं तो आज की डेट में नॉर्मल 7-7.5% बीच में विद न्यू रेपो रेट चेंजेस SBI में अगर आप जाएंगे तो अभी 7.5 के बीच में आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट स्कोर, आपका प्रोफाइल, वो सब देखते हुए. बट ब्रॉडली दिस इज अ रेंज. कंस्ट्रक्शन ऑल्सो एज आई मेंशन, आई थिंक दिस इज द थर्ड फेज ऑफ अ प्लॉट. तो यू हैव आइडेंटिफाइड अ लैंड, आपके पास ऑलरेडी एक लैंड है, उसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट पे भी आपको लोन मिल जाता है. वो लोन आपको ऑब्वियसली देयर विल बी सम आर्टिकेट सर्टिफिकेट्स, सम पेपर वर्क दैट यू हैव टू डू, एंड देन अगेन 80% तक का आपको लोन नॉर्मली easily अवेल हो जाता है आज की डेट में विद द मार्केट. सो कंस्ट्रक्शन लोन इज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट सेगमेंट. But coming back to Chirag ji, there was a time when they said, why are we in the infrastructure business? Now is a time when everyone in India is saying, let's get into the infrastructure business. And one of the biggest aspects of that is housing, and building materials become integral to that. So thank you for partnering with us. But why this endeavor? Why do you want to do this series? So, as India's leading building materials company, we think it's our responsibility not only to educate people about the nuances of building the dream home with quality products and site safety practices, but also facilitate and help them through this journey of building the dream home. So, अगर Nuvoco की बात करें तो सीमेंट के क्षेत्र में, कंक्रीट के क्षेत्र में, मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में काफी वर्षों से एक विख्यात नाम है. अपने इनोवेटिव और उत्कृष्ट उत्पादों की वजह से जाना जाता है और इंडस्ट्री में एक नया मुकाम भी बना रही है. बट अगर हम हाउसिंग की बात करें या अपने घर बनाने की बात करें तो ये एक सपना है जो हम सबका रहता है. The realization of this dream definitely gives us immense joy, pride and a sense of achievement somewhere. तो सामान्यतः अपने घर का निर्माण करने का अनुभव हमारे जीवन काल में एक ही बार आता है. And we believe that this is the apt platform through which we can engage with the viewers and give them a holistic perspective and a view with correct information about every aspect that goes into building of a home, and in turn help them or empower them to make an informed decision on all the critical factors.
अपने लिए सपनों का घर बनाने का फैसला तो कर लिया, पर क्या आप जानते हैं दैट द गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग दिस प्रोसेस ईजियर फॉर होम बायर्स एंड ओनर्स. यस, द गवर्नमेंट हैज़ वेरियस स्कीम्स फॉर हाउसिंग और काफ़ी कुछ कर रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना है, DDJY प्लॉट्स हैं. तो ये हमारी मानसिकता होती है ना, कुछ खरीदने जाते हो सबसे पहले पूछते हैं भाई स्कीम बताओ या डिस्काउंट क्या है. पंकज, आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस कि इफ इट इज कंस्ट्रक्शन लिंक्ड, व्हाट काइंड ऑफ सब्सिडीज कैन आई गेट? हाउ डू आई स्काउट? और मैं कैसे पता लगाऊं कि मुझे कैसे अपना प्लान करना चाहिए फाइनेंशियल्स? तो अगर आप होम लोन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा आज की डेट में सेक्शन दिए हुए हैं गवर्नमेंट में. लोन प्लॉट पे दिया हुआ 1.5 लाख का तक आपको सबसे वो मिल जाता है इंटरेस्ट बेनिफिट. सो बेसिकली जितना भी आप प्रिंसिपल पेमेंट्स करते हैं उसके ऊपर आपको 1.5 लाख तक की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट एज अ टैक्सेशन कोड के थ्रू देती है. तो मैं नॉर्मली आई विल ऑलवेज प्रेफर कि जो भी टैक्सेशन कोड के साथ साथ जो भी EMI दे रहे हैं, चाहे होम लोन ले रहे हैं तो भी आपके सेक्शन डिफाइंड है, आप लोन अगेंस्ट प्लॉट ले रहे हैं तो भी आपके दोनों सेक्शन डिफाइंड है. तो विद इन दो सेक्शंस आपको जो भी सब्सिडी मिलती है उसमें आपको इंटरेस्ट बेनिफिट मिल जाता है. जो भी आप इंटरेस्ट पे रहे हैं उसके ऊपर टैक्स का काफी अच्छा वो रहता है. एंड दिस इज थोड़ा सा टिकट साइज ज्यादा ही रहता है बिकॉज आपको 1.5 लाख का अगर इंटरेस्ट या पेमेंट देना है, प्रिंसिपल दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लोन अमाउंट ज्यादा रहेगा. वो 2 या 4 लाख में नहीं होगा, लिटिल हायर. तो दिस इज विच इज अ सिंपल टैक्सेशन कोड. जब भी आप अपना होम लोन प्लान कर रहे हैं या आप कोई भी अपना प्लॉट लोन प्लान कर रहे हैं तो उसमें आप ये देख लीजिए जो भी आपकी EMI जाएगी उस पर आपको कितना परसेंटेज का टैक्सेशन बेनिफिट पक्का आने वाला. तो वो एक क्राइटेरिया मैं हमेशा से दर्शकों को बोलता हूँ कि जब भी आप अपनी कैलकुलेशन करें लोन लेने से पहले तो ये फैक्टर्स अपने कंसिडर कर लें कि मेरे को 1.5 लाख तक का ये सब्सिडी मिलेगा अपने टैक्सेशन में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आज की डेट में मेरे हिसाब से. अगर आप एक 20 से 25-30 लाख तक का लोन अगर आप अवेल करना चाहें. Sudhir ji, I wanted to know, in this EWS category, the government has a very interesting scheme. They are ready to give up to 70% subsidy or financing. How does that work? Well, on financing, interest is subsidized. That interest subsidy is as much as 6.5% subsidy, which is you get a loan at about 8% or even EWS gets. So it almost free loan, but up to 6 lakh of loan, as I said before. Yeah. And for the higher category, say for the LIG category, that also it will be 6.5% interest subsidy rate. But for MIG, it will be 4% for MIG 1, that is 12 lakh rupee income per year. And above 12 lakh up to 18 lakh rupee per annum family income becomes MIG 2, where interest subsidy rate will be 3%. But the total amount will remain eligible will be like 18 lakh rupees of loan, up to 18 lakh rupee loan for MIG 2 category, up to 12 lakh rupee loan for MIG 1 category, up to 6 lakh rupee loan for LIG category, and up to 3 lakh loan for the EWS category. So that is how it is at the almost, if somebody puts his own seed capital from personal side, so the huge interest subsidy comes for the weaker section of the population. But more or less, going by the number, almost a good part of the population which required houses, as far as number goes, has been saturated, has been provided, and some are under construction in different stages, and many have been constructed. Chirag ji, let me ask you this, that when people buy construction material, आपके साथ का तो आपका तो फोकस वहीं पर है कि बिल्डिंग मटेरियल पे आपका वहाँ पर नुवो को comes into play. What are the important things that one should keep in mind? क्या geographical location बहुत मायने रखता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर मैं दिल्ली में घर बना रहा हूँ या दिल्ली से आगे निकल के नोएडा में घर बना रहा हूँ या फिर सॉइल क्वालिटी उसका फ़र्क पड़ता है, टेरेन का फ़र्क पड़ता है, कहाँ क्या कंसिडरेशंस करने पड़ते हैं? Building materials that we take defines the overall durability, endurance and character of the building. So while cost and quality are important, basis which the right product should be selected, it is also important, like you said, to keep in mind a lot of other things like the lifespan or the utility of the product, उस प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन, उसकी एस्थेटिक्स, कितना मेंटेनेंस आएगा उस प्रोडक्ट को रखने में आगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस, टोपोग्राफिक कंडीशंस एंड जियोग्राफिक कंडीशंस, इन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है चयन करते वक्त, सो दैट वंस यू सिलेक्ट द राइट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर अ करेक्ट फिट इन ऑर्डर टू बिल्ड दैट परफेक्ट होम. ये बहुत जरूरी होता है. So JB, I wanted to ask you, what are the major things that one has to consider while building a house? And सबसे पहले कि मटेरियल किस तरह का यूज़ करना है, कैसे उसकी बजटिंग करूं,
कहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ और किन चीज़ों पे मुझे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? सबसे पहले जब भी आप एक घर बनाने की बात करते हो ना, तो बहुत जरूरी है आपकी बिल्डिंग का जो मैप होना चाहिए वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि द एरिया शुड बी वेल कनेक्टेड एंड द एवरीथिंग हैज टू बी विद द हार्मनी। मतलब कहीं कुछ भी पोर्शन में कटा हुआ नहीं लगना चाहिए। इट शुड बी वेल कनेक्टेड, वेदर इट्स योर लिविंग, इट्स योर किचन, इट्स योर डाइनिंग, वॉशरूम्स, व्हाटएवर, बैल्कनीज, फ्रंट वरांडा, टेरेस गार्डन्स, जो भी आप बनाना चाहें। सेकेंडली, जो चीज मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, जैसे आई मेंशन कि हम हमेशा बिल्डिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिल्डिंग, शेप ऑफ द बिल्डिंग एंड द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग। स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है विच इज अ नॉन कंप्रोमाइजेबल स्टफ, जिसके अंदर वी टॉक अबाउट द गुड मटेरियल्स इन द आरएमसी फॉर्म, स्टील फॉर्म्स, ब्रिक्स एंड एवरीथिंग। मैं ये मानता हूँ कि since the banks are here, the government is supporting, architect fraternity is there, engineer fraternity is there, you know, now the awareness is also spreading the people. So बेस्ट ये होता है कि अगर कोई आदमी इनिशियली अपने प्लान्स को, अपने एरियाज को, अपने बजट को स्ट्रीमलाइन कर ले एंड ही कैन टेक द सपोर्ट फ्रॉम द बैंक। Welcome back to Nuvoco presents Ghar Banao Apna, News18 initiative where we are creating awareness about home construction, home building, from material to money, all under one roof. I saw a lot of beneficiaries over the last 5-6 years. I've seen wherever I've traveled into the heartland and into the rural areas, into villages, even in the urban pockets, a lot of people who now are showing that they've been beneficiaries of these schemes. But I wanted to understand from you, Sudhirji, is there a particular minimum standards or minimum quality control that is applicable? Yes, the quality issue there are national building code standards for housing which have been mandated in the PMAY guidelines that the national building code provisions have to be followed, and these have been communicated to the financing institutions also when they are sanctioning the group housing projects. They have to adopt it. So that is one part. Then secondly, the guidelines have also mandated, facilities or services like rainwater harvesting, solar energy tapping, solar energy, etc., to make the houses at the housing complexes more viable and socially, environmentally and technically. And thirdly, they have also mandated audit of the construction, audit of the project at all stages by having social audit and technical audit, third party quality monitoring. So a strong arrangement for quality monitoring has been set up. Standards set up under National Building Code of the Bureau of Indian Standards and the monitoring by third-party quality monitoring agencies on one hand, and social audit by empaneled social audit agencies also, that is second. Right. And then there is a monitoring by the municipal bodies, municipalities, and in case of rural part, the panchayats concerned, they will have to monitor. So a strong arrangement has been put in place. And I expect that the houses which are coming up are by and large, maybe some exceptions, maybe I'm not sure. Right. But by and large, the houses should be of fairly good quality in planning as well as in construction activities. Right. Let me ask you, Chirag ji, is there a ready reckoner to say how much of what building material I should buy? And I'm asking you this because I know this personally. I had an anecdote. A friend of mine was wanting to add another floor to his house, and the generations thing, so he wanted to add. So he got a quote from 3 contractors. So each one of them gave certain standard requirement for material, but a lot of it, the quotes were different. The quantities that were required. In fact, in certain cases, bags of cement were also varying. So he was wondering who's right. So then he consulted his dad, and his dad gave him another list saying, मैंने 2 घर बनाए बेटा, मुझे पता है exactly कितना कहाँ पे चाहिए, तो इसको use करो. But हर किसी के पास तो ये नहीं है expertise. So how do I get to understand which kind of building material do I use and how much? So अगर हम साइट मिक्स और रेडी मिक्स कंक्रीट की बात करें तो सीमेंट की जो मात्रा है वो कंक्रीट के ग्रेड के अनुसार निर्धारित होती है. उसमें मिक्स प्रपोर्शन भी बहुत एक अहम भूमिका निभाती है, जिसके अनुसार क्वांटिटी एस्टिमेशन को की जा सकती है. तो चूंकि उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं, तो निर्माण सामग्री की क्वांटिटी से जुड़ी सारी जानकारी और आसान कैलकुलेशन आप निवोको की वेबसाइट nivocohomeassist.com पर भी पा सकते हैं. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ प्रोफेशनल business development and technical team across all our operating states.
So this team works closely with home builders, engineers, architects, contractors and masons to provide them technical know-how, quantity estimation, technical support for building and guidance, product demonstration and slab supervision services as well. So this team is only a phone call away. So any kind of a help that home builder may require, it is always easily available for them. Well, we need to populate this information a little more so that more people are aware. But JB, let me ask you this, and we're coming towards the closing part of our thing. The final aspect of one is finding the land, identifying the scheme, sourcing the finance, sourcing the material, consideration. But more importantly, it's also about completion. My query to you is, does geography matter? Does weather matter depending upon how much time it will take for you to complete the same kind of a house on a similar size of a plot? With the same layout, everything the same, but does geography come into play? And how much of a time do I give? Say, supposing I have a 900 square feet house to build and it is ground plus one floor and a terrace, that's how it is. So is there a timeline that I should work with? What all factors come into play there? There are many factors which actually impact the speed of the construction. So, इसमें मैं ये बोलूँगा कि जो नॉर्मल जो जोग्राफिकली कंडीशन होने के बाद एक ना हर जगह का मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम लिमिट आइडेंटिफाई किया हुआ होता है कि but sometimes it also depend on which grade of contractor you are hiring for your job. What is his reputation? What kind of past experience and deliveries he made? So, this is also, but geography is the major undisputed the things which really decide, but the matter, which other things which matters like the team, which type of team you hire for your job. So, yes, it impacted geography. Well, structure बन गया, उसके बाद बाकी फटाफट काम खत्म करो. Is that a good attitude to have? कि भाई थोड़ा टाइम लग भी जाए लेकिन तबीयत से करो. What should be the correct attitude? Because there is a cost implication to that also, and of course time pressure. देखिए इसमें ना आनंद मेरे ख्याल से जो राइटली सेट के जब स्ट्रक्चर बन गया और जो फिनिशिंग को फटाफट करने की जो अप्रोच है ना वो कई बार इट्स लाइक यू मेड योर बॉडी गुड बट फैब्रिक में आपका कपड़ा फट गया या स्टिचिंग प्रॉपर नहीं आई सो यू ऑलवेज व्हेनेवर यू समबडी सी यू नॉट सी यू सी फर्स्ट ही विल नेवर सी योर स्केलेटन और योर बॉडी ही विल सी योर फैब्रिक व्हिच यू वेयरिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर एक टाइम देना चाहिए, एक अच्छी टीम हायर करनी चाहिए. जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा और लाइटर टोन में बोलूं लाइक दी ऑल दी टीम्स आर हियर, एक अच्छा घर बनाना ना आनंद इट्स लाइक मेकिंग अ गुड मूवी वेयर ना यू नीड टू हैव द राइट पीपल ऑन द राइट प्लेस जिनको अपना काम पता हो. और ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी आर्किटेक्ट फिटनेटी है जो हेल्प करती है टू द बायर, टू द होम ओनर. हाँ, पर जैसे कहते हैं ना पिक्चर में स्क्रिप्ट अच्छी हो काफ़ी ज़रूरी नहीं है, एडिटिंग और क्लाइमैक्स भी बढ़िया होना चाहिए, पैकेजिंग और मार्केटिंग बढ़िया, एवरीथिंग हैज़ टू बी गुड. सो यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन वन एंड देन एक्सपेक्ट द अदर्स टू डिलीवर एंड मेक इट वर्क फॉर यू. सो पेशेंस इज की. बट मोर इम्पोर्टेंटली माई फाइनल क्वेश्चन टू पंकज इज हाउस इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, you can, it's a little bit of a premium that you have to pay to secure what you have invested your life savings in. अभी आज की रेट में अगर आप होम इंश्योरेंस देखेंगे, कहीं पे भी बाढ़ आ गया, आज की डेट में नेचुरल कैलामिटीज बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी चीज़ें इकोसिस्टम डिसबैलेंस दिखने को देख रहे हैं. तो मेरा एज अ पर्सनल रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि जब भी आप कोई घर बना रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एन इंश्योरेंस अराउंड इट, बिकॉज वो कैलामिटी कभी भी किसी को भी हिट कर सकती है. और जब आप इतना खर्चा करके अपना घर बनाते हैं करोड़ रुपए का, तो एक प्रीमियम आप दे सकते हैं साल में जस्ट टू बी फीलिंग सिक्योर्ड. ये मैं इसको एज एन एक्सपेंस नहीं लेता हूँ, इसको सिक्योरिटी की तरह से लेता हूँ मैं. तो ये आप कर सकते हो. उसमें कई तरह के होम इंश्योरेंस होते हैं. एक होता है जो कि आपका नेचुरल कैलामिटीज होता है लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड ऑल दैट. एक होता है जो कि जैसे फायर, थेफ्ट, बर्गलरीज दैट हैपेंस आज की डेट में बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव सीन की थोड़ा सोशल सोसाइटी में भी चेंजेस आने लग गए हैं. तो मेरा हमेशा से रिकमेंडेशन रहेगा ये लेना चाहिए. कई बार ऐसा भी होता है कि the bank from which you've taken the loan also offers you the insurance and then they add that premium and to your EMI, so it goes on a monthly basis and you don't have to pay it one time. But if they have a good claim settlement ratio, you can consider that also. That's also a possibility. Gentlemen, it's been a great conversation. Well, after all that we've learned today, one thing is clear: building a house might be a task, but at the end of it, it just
becomes a celebration. घर सिर्फ मकान नहीं होता, उसमें सपने पलते हैं जो भविष्य को उज्जवल करते हैं। और सभी यही कहते हैं कि घर आज आप कहाँ पर हैं उसको देखकर मत बनाइए, आप कल अपने आप को कहाँ देखते हैं उस हिसाब से बनाइए। एंड देयर यू विल ऑलवेज सी यू ग्रो, योरसेल्फ ग्रो। सो दैट्स हाउ यू नीड टू गेट इनटू इट। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेरी स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑफ नुवोको प्रेजेंट्स घर बनाओ अपना, a News18 initiative. Thank you very, very much.